Hello students, good afternoon. So today we will start a new chapter, we'll start a new topic, namely array. So before starting it, I just want to know whether you people doing the assignment what I am given yesterday. Neha, Sudeshna responded, and remaining students, Shudipto, Aditi, Karan. Okay. So any doubt, student? Sumit, Sumit Maji. Okay, okay, okay. I will surely show you the concept, the logic section. So, students, uh, today I will start the new topic, which is array. One more announcement. Uh, I will take an extra class on next Monday from 12 p.m. Okay, 12 noon. So, those who have any query, any doubts about the previous topic, please join and clarify your doubts. Okay, students, on the next Monday from 12 noon, I would like to take an extra class. Those who have any query, any doubts about the previous topic, may please join and clarify their doubts. Okay, students. Okay. So I am sharing my screen. Is it visible? Let's start. So here is the definition of array. It is a contiguous memory location to store large number of homogeneous data items. In other words, array is a collection of variables of the same type. So this is the formal definition of an array. What is an array? It is a contiguous memory location to store large number of homogeneous data items. What is the meaning of homogeneous? Homogeneous means similar type of, same type of. Okay, and what about contiguous? Contiguous means one after another. So it is a contiguous memory location to store large number of. Large number of means when we are trying to store some integers like say 10 integers or 15 integers or 100 integers.
then it can be termed as large number of. So in other words, array is a collection of variables of the same type. Let's understand the definition. Just consider the example. Suppose we wish to write a program to find the sum of 10 integers. हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है जो प्रोग्राम से हम लोग 10 इंटीजर का सम निकाल सके. For this, we may write the following code. So students, in order to take 10 integer numbers, we will have to declare 10 integer type variables. As you can see, here I am declaring all these variables: a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, and another variable s is also there. So after taking all these variables individually, here I am taking the values for this variable from user with the help of this scanf function. Look, here I am prompting a message, enter 10 numbers. After that, the scanf statement. Here, how many percentage D's are required? How many percentage D is required? So how many numbers? How many numbers we want to take? 10 numbers, 10 integer numbers. So 10 percentage D I need to write here. So percent D, dot percent D. Then after comma, ampersand A1, ampersand A2, dot ampersand A10. You may take separate scanf to store the values in these variables. You may take 10 separate scanf also. Okay, here I am using a single scanf function, but you may take 10 scanf function also. Now after that, I am writing s is equals to a1 plus a2 plus a3 plus a4 dot up to a10. So then I will just print the value of s, and this will display the sum of all 10 numbers. So students, can you tell me what is the difficulty or what is the drawback of this program? Yes, here we are taking many variables. This is the correct answer. But look here, we need 10 variables now. Here actually we want 10 numbers. 10. We want to store 10 numbers. So in order to store 10 numbers, we will have to declare 10 variables. यहाँ पे हम लोग 10 वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन 10 वेरिएबल तो मुझे चाहिए, 10 नंबर मुझे स्टोर करना है, तो ऑब्वियसली 10 मेमोरी लोकेशंस आर रिक्वायर्ड. 10 मेमोरी लोकेशन अगर नहीं रहेगा मेरे पास, तो क्या मैं 10 नंबर को स्टोर कर पाऊंगा? द आंसर इज नो. Yes, we here in this problem we want to take 10 numbers. That's why we have to take 10 variables. But just consider a situation, just consider this program. I'm not going to add 10 numbers. I am going to take say 100 numbers or 150 numbers. Then what I have to do? Obviously, then also I will have to take that much number of variable in my program. 150 variables are required, isn't it, students? Then inside in scanf function, I should write this percentage d statement 150 times. Then after comma a1, comma a2 up to comma a150, like this. Again, to find out the sum of these all variables, we need to write s is equals to a1 plus a2 plus a3 dot plus a150.
So it is not feasible, I think. Is it feasible for a programmer? For a programmer, can you manage all these variables? It is very difficult for a programmer to manage such a large number of variables, isn't it, students? Got my point? So, when this type of situation arises, when this kind of situation arises, then we have to use some different technique, some different concepts, which is known as array. Let's see. In the previous example, we have declared 10 integer values, 10 integer variables, a1, a2, a3, dot, 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 a10. Now, if we declare like above, it will be very difficult for us to manipulate the data, to manage the data, isn't it? Now, if we wish to incorporate more integers, say 150 number of integers, then it is very difficult to declare a lot of variable and keep track of it. To overcome this kind of situation, we should use array. So, what is an array? How we are taking arrays? See, to store, it is the declaration of array. To store 10 integers, we can simply declare an array like below. Int, then name of the array a, then take a third bracket, then 10. So here this int denoted the type of this array, a is the name of the array, and 10 is the size of the array. And this declaration will allocate a memory space like this. Actually, by using this declaration, क्या होता है मेमोरी में इस तरीके का एक एलोकेशन बनता है, इस तरीके का एक एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन बन जाएगा तुम्हारे पास. So how many variables we want here? 10 variables. So look here, 10 blocks are allocated. This is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. But here, all the variables are allocated in contiguous manner. What is the meaning of contiguous? One after another. One after another. Look here, this 1010, I'm considering here this 1010 is the address of the first block. 1010 is the memory address of the first block. Now see here, 1012 is the address of the second block. Why it show? Because these two blocks are contiguous blocks, one after another. Query? Any query, students? But I have a query. I have a query. Where is the address, memory address 1011? Yes, here exactly. Here, each and every block is of type integer type. Is of type integer, and as we know, integer type block contain 2 bytes memory. 2 bytes memory. So this 1010 is the address of the first byte, and the 1011 obviously will be the address of the second byte. So these two addresses are required for the first block. Then second block will start from memory address 1012. Okay. Similar way, the third block address of the third block is 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024. In this way, all these memory addresses are there. Okay, so students, how can we declare an array? We can write the data type, that means int, then name of the array, then within the third bracket, size of the array. Okay, this will allocate memory space. This will allocate memory space like this. So here you can see I need not to write that much. I need not to declare that much number of variable, 10 variables. But just writing this, but just writing this A10
I solve this purpose. जब हम लोग यहाँ पे int a10 लिख रहे हैं, उसी से मेरा जो मेरा 10 वेरिएबल का डिक्लेरेशन का जो पर्पस था वो मेरा सॉल्व हो जा रहा है. But there is a major difference in between the individual variables and the array. What is the difference? In case of individual variable, each and every block have its own name. I'm taking a1, a2, a3, a4 like this, na? So all these individual variable have its own identifier or name. But in case of array, the entire memory block have a single name, that is A. This is the name of the entire array. Then how can we identify, how can we access any particular block, any particular variable from this memory location, from this array? With the help of this index values, we can do so. Look here, I'm writing 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So those are the index values of these blocks. And indexing will be start from 0. Indexing always starts from 0. Okay, so the index for the first block is 0. Index for the second block is 1. Next block index is 2. In this way, the last block index is 9. Since there are 10 blocks, the size of the array is 10. So index is started from 0. So it will be end with the number 10 minus 1, that is 9. Got it? So with the help of this index values along with the name of the array, we can access any particular block of this array. Let's see. With the help of the name of the array and index, we can directly access desired block or variable. We can directly access our desired block or variable. Look, suppose we wish to access this fifth block of this array. This is the fifth block, first block, second block, third block, fourth block, fifth block. The highlighted block is the fifth block. So by writing a third bracket 4, just see the style. Name of the array, third bracket, index of the block. A third bracket 4, we can access the fifth block directly. Okay, students, up to this. Any query? If you have any query, any doubt, please ask me. Please ask me. Up to this, if you have any query, any doubt, please ask me. Please don't be shy. Now again, we will read the definition. Anyone, please read it out. Any student, please read the definition. So just concentrate on the first sentence. It is a contiguous memory location. So why it's known as contiguous? We have already seen. Contiguous means what? One after another. That means blocks are allocated one by one after another. 10 10 followed by 10 12 followed by 10 14 in this way. Okay, so if we take the individual variables like a1, a2, a3, a4, then these variables we cannot predict the address of these variables. Maybe a1 is allocated in the memory space 10 10, a2 is allocated in the memory space 30 30, in this way. But if we take an array, then we can say, or we can surely say that the second block must be allocated just after the first block. The second block must be allocated just after the first block. Okay, so that is why it is contiguous memory location. So it is a contiguous memory location. And what is the purpose? What is the purpose of this array? To store large number of homogeneous data items. Large number of matlab
मतलब एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा, एक लार्ज नंबर ऑफ मतलब एक ज्यादा नंबर ऑफ, क्या बोलूं मैं, ज्यादा नंबर ऑफ ही तो होगा ना, इट्स अ बिग नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा ऐसे जब नंबर्स को हम लोग स्टोर करना चाहेंगे, वही तो काम है एरे का। यहाँ पे जैसे हम लोग देखें कि फॉर दिस एग्जांपल वी आर ट्राइंग टू स्टोर 10 नंबर्स, 10 इंटीजर नंबर्स, एंड व्हाट अबाउट दिस होमोजीनियस, होमोजीनियस मीन सिमिलर टाइप। ऐसा नहीं है कि एक एरे हम लोग डिक्लेयर कर लिए और उसमें फर्स्ट ब्लॉक में एक इंटीजर टाइप ब्लॉक वैल्यू रखे, सेकंड ब्लॉक में एक फ्लोट वैल्यू रखे, थर्ड ब्लॉक में फिर एक इंटीजर स्टोर किए, फोर्थ ब्लॉक में कैरेक्टर वेरिएबल को स्टोर किए, वैल्यू को स्टोर किया, ऐसा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे सारे के सारा ब्लॉक जो होगा सब एक टाइप का ही होगा, सिमिलर टाइप का होगा। दैट इज व्हाई दिस टर्म होमोजीनियस इज यूज्ड। ओके, इसको अलग भाषा में भी हम लोग बोल सकते हैं एरे का डेफिनेशन। इन अदर वर्ड्स, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप। सो ये सब क्या है, ये जो ब्लॉक्स बना मेरे पास, इन सारे ब्लॉक्स को तो हम लोग एक एक वेरिएबल ही बोल सकते हैं ना। This is my first variable, this is my second variable, this is my third variable. So all these variables make a collection. So this is a collection of variables of similar type. Okay, students, up to this, any query, any doubt? Okay, okay. Next. So how can we initialize, how can we initialize an array when we are taking individual variables like int a? So how can we initialize this variable a? We may write a is equals to 5 in this way, na? Suppose we are taking a variable, oh, sorry, int a. So in order to initialize this variable with 5, we may write a is equals to 5. This is the way. But how can we initialize an array? So when we are considering an array, then we need to take not a single value, we need to take multiple values. Na? So that is why we need to follow some different mechanism. So these are the two types of initialization of an array. Just see, we can initialize an array while declaring it like below. Int a 10 is equals to all the values 5, 20, minus 3, and all these values are written with comma separator. Okay, we are separating this with comma. So 5, 20, minus 3, 4, 6, 1, minus 2, 10, 9, 2, those are the 10 values. So 5 will be stored in the first location, in the first block, 20 will be stored in the second block, minus 3 will be stored in the third block, in this way. Okay, there is another approach. We can also we can also let the compiler to determine the array size but not giving the initial array size while initializing it. That means हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जब array को declare कर रहे हैं तब उसका size यहाँ पे declare नहीं किया, just let it be blank. Okay, int a, देखो यहाँ पे कोई size हम लोग mention नहीं किया, but equals to के बाद जो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे एरे का साइज ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाएगा, कंपाइलर डिटरमाइन कर देगा। if we take 10 numbers, if we take 10 integers, then the size of the array is determined as 10. If we take 3 numbers, then size of the array is determined as 3. The compiler will do this thing. Okay, so this is how we can initialize an array. ये तरीके से हम लोग, इस तरीके से हम लोग array को initialize कर लेते हैं। Getting it? Okay. Now,
how to get input from user into the array. Look, I'm rewriting this program, the previous program. That means here I'm not taking 10 individual variables. Instead of that, I'm taking an array of size 10. Okay, so as we see in our previous slide, that means 10 blocks will be allocated by writing this, and all these blocks can be accessed with respect to the name of the block and the index of the block. That means A0, we may write A0, A1, A2 in this way. So how can we take values from the user? We need to execute scanf function. We need to take scanf function. So for the first value, we may write in this way: scanf percentage d comma ampersand a0. है ना स्टूडेंट्स? सेकंड जो ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक में वैल्यू स्टोर करने के लिए कैसे लिखेंगे? ampersand a1 scanf percent d ampersand a1. थर्ड ब्लॉक में scanf percent d ampersand a2. ऐसे चलते मेरा लास्ट ब्लॉक तक scanf percent d ampersand a9 ऐसे लिखना होगा. Now finally we can add the values of the different blocks. So here I am writing S is equals to A0 plus A1 plus A2 plus up to A9, and finally I can print the result. So students, any query, any doubt? Okay. So students, what do you think? What is the utility of array? अपने भाषा में बोलो, जो भी समझ में आया है अपने भाषा में. क्या यूटिलिटी क्या लग रहा है? प्रॉब्लम क्या था? What is the problem and how we are solving it? सिंगल वेरिएबल में कहा हो रहा है भाई? 10 वेरिएबल ही बन रहा है मेरा यहाँ पे. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7 करके A9 तक मेरे पास 10 वेरिएबल ही बन रहा है. ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल बन रहा है. लेकिन मुझे फायदा कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे फायदा हो रहा है मुझे? जोर से बताओ, नहीं सुनाई दे रहा. प्रोग्रामर के लिए टाइम बच रहा है, प्रोग्रामर का मेहनत कम हो रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज द पॉइंट. एक्चुअली दिस एरे, एक मिनट, एरे का जो कॉन्सेप्ट है, एरे का कॉन्सेप्ट जो है, ये तुम्हारा प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाता है, ऐसा नहीं है. देखो, इस प्रोग्राम का जो एफिशिएंसी है और पहले वाले प्रोग्राम का जो एफिशिएंसी था, सेम ही है, सेम ही है. वहां पर भी 10 ब्लॉक डिक्लेयर कर रहे थे हम लोग, A0, A1, A2, A3, A4 करके. यहाँ पे भी मैं 10 ही ब्लॉक को डिक्लेयर कर रहा हूँ. यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कम, A1, A2, A3 ना लिख के मैं डायरेक्टली A थर्ड ब्रैकेट में 10 लिख रहा हूँ. तो टाइम बच रहा है मेरा, प्रोग्रामर का. तो एरे कुछ हद तक प्रोग्रामर को रिलीफ देता है, प्रोग्रामर को इजीली प्रोग्राम लिखने में हेल्प करता है. एरे इज अ टूल. बाय यूजिंग इट, प्रोग्रामर कैन राइट वेरी एफिशिएंट प्रोग्राम्स और यूजफुल प्रोग्राम्स. हाँ बोलो, कौन बोलना चाहते थे? बोलो. एक बार में ही डिक्लेयर कर. देखो, A1, A2, A3 वो सब सारा कुछ लिखना नहीं पड़ा, एक बार में ही मैं सब कुछ को डिक्लेयर. कितना फायदा हुआ मुझे? ठीक है. ओके, सो लेट्स डूइंग इट इन आवर C compiler.
इंट ए कट ब्रैकेट 10। ऐसे लिखने से ही मेरे पास 10 ब्लॉक का डिक्लेरेशन हो जाएगा, A0 to A9, है ना। और क्या चाहिए, एक एस वेरिएबल चाहिए ऐड करने के लिए। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, यूजर से वैल्यूज पूछूंगा, एंटर 10 नंबर्स, स्कैनफ, क्या लिखना होगा बताओ। फर्स्ट ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए %d, कॉमा, एम्परसेंड A0। ओके, scanf %d, कॉमा, एम्परसेंड A1। थर्ड ब्लॉक के लिए क्या होगा, फॉर द थर्ड ब्लॉक, बोलो भाई क्या होगा बताओ। हेलो स्टूडेंट्स, एम ऑडिबल। हेलो, so it is visible na. So for the third variable, for the third block, we may write scanf %d, ampersand, बताओ क्या होगा, A2। हाँ, हाँ। So for the fourth block, scanf %d, comma, ampersand A3। In this way, all this block, for each and every block, we need to write the scanf statement. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, है ना। Now ऐड करने के लिए S is equals to similarly A0 plus A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 plus A7 plus A8 plus A9, ऐसे लिखना लिखना होगा मुझे। And finally I can print the sum।
Okay, students, any query, any doubt? अच्छा अच्छा, नो सर कौन बोले? बोलो क्या नाम है आपका? प्रियांशु। चलो अब इस प्रोग्राम को 100 इंटीजर्स के लिए बनाते हैं। तो क्या कहाँ पे चेंज 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 होगा बताओ? एक और वेरिएबल क्यों? यहाँ पे ये 100 कर देंगे तो 100 ब्लॉक्स मेरे पास बन जाएगा। और फिर ये स्कैनफ का जो है, स्कैनफ कितना बार लिखना होगा? 100 टाइम्स। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एरे यूज करके क्या सिर्फ डिक्लेरेशन में मुझे फायदा मिला? ये तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मैं डिक्लेरेशन में थोड़ा सा मुझे राहत मिला, चलो भाई उतना वेरिएबल मत नहीं लेना है, नहीं लिखना है। लेकिन बाकी सब जगह पर तो हम लोग को लिखना पड़ रहा है। स्कैनएप में मुझे 10 नंबर्स को इनपुट लेने के लिए 10 बार स्कैनएप लिखना पड़ रहा है। ऐड करने के लिए मुझे 10 लोकेशन को एक्सेस करने के लिए वो A0 से A9 तक लिखना पड़ रहा है। तो कहाँ पे मैं मतलब प्रोग्रामर फ्रेंडली बना कहाँ, ये प्रोग्रामर को राहत कहाँ मिला? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से एरे को एक्सेस नहीं करते हैं। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू एक्सेस एन एरे। ओके, आफ्टर डिक्लेयरिंग एन एरे we actually access this use a loop with the help of a loop. Look, we can get input from the user and store it in array using a loop. Int a10 s is equals to 0 comma I, some variables are taken here. printf enter 10 numbers, हम लोग 10 नंबर इनपुट करने के लिए ये printf मैसेज पहले देते हैं। उसके बाद scanf को देखो हम लोग इस तरीके से लिख रहे थे, scanf %dm %a0, scanf %dm %a1, scanf %dm %a9। यहाँ पे तो डॉट डॉट डाल दिए कॉपी में, लेकिन वहां पे तो डॉट डॉट नहीं काम करेगा ना, वहां पे पूरा मुझे लिखना होगा। 10 नंबर है तो 10 बार लिखना होगा, अगर 50 है तो 50 बार लिखना होगा, 150 है तो 150 बार लिखना होगा। तो फायदा कहाँ क्या हुआ, मुझे एरे लेने में क्या फायदा हुआ? सिर्फ डिक्लेरेशन में क्या नहीं, एरे को हम लोग बहुत आसान तरीके से यूज भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। देखो ये जो स्कैनफ जो लिख रहे थे ना 10 बार, उसके बदले में जस्ट वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट, वी कैन टेक अ लूप which will run from first index to the last index। फर्स्ट इंडेक्स क्या है? 0। लास्ट इंडेक्स क्या है एरे का? यहाँ पे 9। so this loop will run from 0 to 9 i प्लस प्लस। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस लूप के अंदर आई का जो वैल्यू होगा, आई का वैल्यू क्या कहां से लेके कहां तक वेरी करेगा? 0 से लेके 9 तक वेरी करेगा। 0 होगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑल वैल्यूज आर कमिंग विद द वैल्यू ऑफ आई, है ना? तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बार स्कैनएफ लिखूंगा। देखो लिख रहा हूं मैं स्कैनएफ %d कॉमा %ai। देखो यहाँ पे ए आई लिखा गया है। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा ये लूप एग्जीक्यूट होगा तब स्कैनएफ %d %a0 यहाँ पे काम बनेगा उसका, मतलब मेरा जो फर्स्ट स्कैनएफ है उसका काम यहाँ पे हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट टाइम आई जब इंक्रीमेंट करके 1 होगा, 1 के लिए फिर जब अंदर आएगा तब फिर यहाँ पे लिखाएगा स्कैनएफ %d %a1, यानी कि मेरा सेकंड स्कैनएफ जो है उसका काम बन जाएगा। थर्ड टाइम जब आई 3 बनेगा, सॉरी 2 बनेगा, 2 के लिए वो थर्ड ब्लॉक के लिए काम कर लेगा। ऐसे ही मेरा हर एक ब्लॉक में वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा, मतलब यूजर से वैल्यू लेके वो एरे में स्टोर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक। एनी डाउट स्टूडेंट्स, एनी क्वेरी? ओके, सिमिलरली जब हम लोग वहां पे एस इज इक्वल्स टू A0 से लेके A9 तक लिख रहे थे, वहां पे भी हम लोग लूप लगा सकते हैं। लूप लगा के एंटायर एरे को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? I is equals to 0, I less than n, I plus plus, sorry, for I equal to 0, I less than equals to 9, I plus plus,
then within the loop s is equals to s plus ai, s is equals to s plus ai लिखेंगे तो क्या होगा, a0 से लेके a9 तक सारा वैल्यू यहाँ पे मुझे ऑब्टेन हो जाएगा और उन सारे वैल्यूज को मुझे एक के साथ दूसरे को, दूसरे के साथ तीसरे को ऐड करते हुए जाना है, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे s is equals to s plus ai and the initial value of s should be declared as 0. So all these values are getting added and stored in this variable s, and finally we can print the value of s. Okay students, so this is the correct way to use an array or access an array. Whenever we want to access the entire array, we need to take a loop which will run from starting index to the last index. Okay, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया, इस तरीके से लूप लगा के, लूप लेके हम लोग एरे को यूज करते हैं. स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है मेरा, सुन रहे हैं ना आप लोग? हेलो, अच्छा, हाँ, अगर हम लोग इंडिविजुअल वेरिएबल लेते हैं, तो मान लो कि a1 a2 a3 करके a10 तक लेते हैं, और वहां पे क्या ये पॉसिबल है कि लूप के थ्रू हम लोग वो काम करें, मतलब स्कैनएफ वाला काम लूप के थ्रू करें, या फिर ऐड करने के लिए लूप लगा ले वहां पे, ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, ये एरे का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? लूप से सॉल्व किया, यानी कि लूप लिए और उसके अंदर स्कैनएफ लिखे. और देखो सम निकालने के लिए भी हम लोग लूप का यूज किए. चलो इसको रन करते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है ये. आई को डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं किया मैंने यहाँ पे. 10 नंबर्स, 10 नंबर पूछा जा रहा है मुझसे. तो देखो, ये 10 नंबर में जो डालूंगा वो आइदर मैं स्पेस देके डालूंगा यहाँ पे, 5 स्पेस 5 स्पेस 5 स्पेस 5 ऐसे करके, या फिर एंटर देके भी ले सकता हूँ. यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैं 4 वैल्यू ले चुका हूँ, फिर उसके बाद 6 और 6 वैल्यूज में एंटर देके ले रहा हूँ. हाँ हाँ हाँ, नहीं समझा, बताओ. नहीं नहीं नहीं, स्कैनएप में कोई बैकस्लैश टी नहीं ले सकते हम लोग. बैकस्लैश टी, बैकस्लैश एन, ये सब हम लोग प्रिंट में ले सकते हैं, ठीक है. स्कैनएफ फंक्शन में उसका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का कोई यूज नहीं है. तो वैल्यूज को लेने के लिए आइदर हम लोग स्पेस देके ले सकते हैं, ऐसे 5 स्पेस 5 स्पेस 5 स्पेस 5. ये मेरे से 10 नंबर लेता जाएगा, वो लूप कंटिन्यू जैसे जैसे होता जाएगा वैसे 10 नंबर्स इट एक्चुअली टेक्स फ्रॉम द यूजर, टेक्स फ्रॉम द प्रोग्रामर. एक्चुअली यहाँ पे तो यूजर और प्रोग्रामर एक ही है, तो यूजर से एक एक करके वैल्यू वो लेता जाएगा 10 नंबर जब तक उसे नहीं मिलेगा. तो कितना नंबर लिया है, आइदर वो वैल्यूज को मैं स्पेस सेपरेट करके दे सकता हूँ, या फिर एंटर देके ले सकता हूँ.
जैसे यहाँ पे 4 वैल्यू को स्पेस सेपरेट करके लिया मैंने, फिर बाकी 6 नंबर्स को मैं एंटर सेपरेट करके ले रहा हूँ। ठीक है, तो 5 हो गया मेरा, फिर एक 5, 6 वैल्यू हो गया, 7 वैल्यू हो गया, 8 वैल्यू हो गया, 9 वैल्यू हो गया, 10 वैल्यू। ठीक है, देखो 10, जब तक ना मैं 10 नंबर डाल रहा हूँ तब तक वो वैल्यू पूछता जा रहा है। देखो सम कुछ आ रहा है 1314, आई थिंक इट इज रॉन्ग। 1314 सही है क्या? हाँ, ऊपर में शायद s इक्वल टू 0 नहीं था। हाँ, अब सही है। चलो फिर से 10 नंबर डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20। सही है। So students, up to this, any query, any doubt? So this is the basics of an array, and this is how we can declare it, we can use it. So I will send the pictures, the study materials in the WhatsApp group. You just go through it. Okay, from book. Also, you can take reference. इसको अच्छे से देखना, ठीक है, और प्रैक्टिस करना आप लोग। हाँ हाँ बोलो, শুনতে পেলাম না। হ্যাঁ, পরশু নোটটা পাঠানো হয়নি, রাইট। I will send it today, by today, okay? Obviously, I will send it today. রৌনক মিশ্রা কিছু বলছো? ओके, ठीक है, फिर आप लोग अपना अपना अटेंडेंस डालो यहाँ पे। भाई नंबर दिखा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे। आज वैक्सीन लेने जाना है मुझे, फर्स्ट डोज। वैक्सीनेशन हो गया आप लोगों का? ঠিক আছে, আমি যাদের হয়নি তাদের জন্য ডিসকাস করে দেবো একবার, যাদের হয়ে গেছে ঠিক আছে। ওকে, হুম হুম।